Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. Journalist in illegally occupied Gilgit-Baltistan living a life of misery. The traders in Gilgit city protest against frequent load shedding. Kashmiri students receive entrepreneurship training in Pulwama to make a career in aromatic plant industry. Doctor on Wheels ambulance makes its way to the villages of Kathua. And later in our section of Incredible India, we'll take you to get soaked in the performances at this year's Khajuraho Dance Festival. Journalists in the illegally occupied Gilgit-Baltistan are going through an existential crisis. With meager or no salary being paid for their services, they are forced to live in penury. Many complain that government has turned a deaf ear to their problems and is doing nothing for their welfare. Have a look. The media industry of illegally occupied Gilgit-Baltistan is crumbling amid government's negligent attitude. With media organizations paying little or no salary to journalists, they are forced to either live in poverty or leave the profession. Journalists in Diamar complain of not having a press club, even after so many mega projects are being undertaken in the district. बिलखुसूस दियामर में सूरत हाल ये है कि यहाँ अभी तक प्रेस क्लब की बिल्डिंग नहीं है, तो इधर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. अभी दियामर बादशाह डैम बन रहा है. कम से कम वापदा को तो चाहिए कि वो एक अच्छा सा वेल फर्निश्ड प्रेस क्लब बना के इधर के साथियों को दे दें. तो आजकल के इस दौर में दियामर जो कि पूरे जीबी का दूसरा बड़ा जिला है, यहाँ प्रेस क्लब न होना लामा फिक्रिया है. इधर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वो फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सीनियर जो इधर जो साफिद साहब इस्टा लोग थे, वो उनको जो छोटी मोटी मुलाजमतें मिलती हैं तो छोड़ के चले जाते हैं. तो ये सबसे बड़ा मसला है. During the pandemic, journalists in Gilgit-Baltistan suffered the worst deterioration. They lost jobs, faced suspensions, and many even succumbed to the virus. But the government organizations like Press Foundation that have been established to look after the welfare of journalists didn't provide any sort of assistance to them. At present, the situation of journalists is such that they can't even pay the rent of their homes and school fees of their children. बहुत सारे मुश्किलात में है गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी. हाल में उनके इशूज़ इस तरह हैं कि वो ना अपने बच्चों की फीस से टाइम पे दे सकते हैं, ना अपने घर के बच्चों के लिए खुराक टाइम पे ले सकते हैं, मुख्तलिफ किरायों पे रहते हैं. हमारे दोस्त, हम खुद, तो वक्त पे वो मकान का किराया भी अदा नहीं कर सकता है. तो बहुत सारे मसाइल हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान में कोई इदारा, गिलगित बल्तिस्तान के किसी ऑनर का इस तरह कोई चैनल नहीं है, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, मुख्तलिफ जो नेशनल चैनल्स हैं हमारे, तो उनका तवज्जो जो है गिलगित बल्तिस्तान पे बहुत कम रहता है. Journalists, who are the messengers of people's plight to the government, have been for long bearing the brunt of the rapidly deteriorating economics of one of the most unorganized sectors of illegally occupied Gilgit-Baltistan. Young scribes find it extremely hard to sustain in an industry they were always aspiring to be a part of. Protests against power outages have become a norm in illegally occupied Gilgit-Baltistan. People are constantly urging the government to look into the issue, but to no avail. Recently, the traders of Gilgit city protested against the issue of load shedding that has become a matter of big concern for them.
Traders and shopkeepers in the Gilgit city recently took to streets to protest against power outage that has thrown their life and business out of order. Boiled over government's apathetic attitude, demonstrators blocked the road in the market area, restricting the movement of vehicles. They said there is no electricity for the last 3 days, and yet the authorities have done nothing to resolve the issue. जनाब, ये आप जो एहतजाज देख रहे हैं, ये यहाँ पे लाइट का मसला है। पिछले 3 दिनों से बाजार एरिया में कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं आई है, और जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदार हजरात और यहाँ की मार्केटें बंद हो गई हैं। दुकानदारों ने एहतजाज किया है ताकि लाइट का मसला हमारा हल कराया। जो हमारे जिम्मेदार हुक्काम हैं, उनसे हमारा मुतालबा है कि ये लाइट का मसला हमारा हल करवाया जाए। पिछले दिनों सर ये 3 दिनों से लाइट बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से हम जनरेटर चला के और यूपीएस चला के गुजारा कर रहे हैं। अब तो यूपीएस भी जवाब दे गए हैं और जनरेटर पे ही गुजारा कर रहे हैं। जिनके पास जनरेटर है वो तो चला रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो अपनी दुकानें और कारोबार बंद करके बैठे हुए हैं। It's not just the Gilgit city, but the entire region of Gilgit-Baltistan has been reeling due to long power cuts for long. Even after having a number of power stations and regular supply of river and rainwater, the authorities in the region have failed to provide proper electrical supply to the residents. The traders and small businessmen are most affected due to this government's apathetic attitude. As for many, no electricity means no work and therefore no earning. During the protest, demonstrators even warned the government that if it will not take an immediate action, then people across the Gilgit city will come out on roads. कारोबार मुकम्मल ठप हो चुका है और लोग जो है बैंकों से कर्जे लेके अपना कारोबार चला रहे हैं, और उधर से पेट्रोल की कीमत आपको पता है 160 से तजावुज़ कर गया है, और ये वाटर पावर का महकमा जो है टच से मस नहीं है, और आवाम को सहूलत देने के बजाय दिन ब दिन ये बिजली में अक्सरी आ रही है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस बिजली को जल्द अज जल्द बहाल करके हमें मतलब बिजली मुहैया किया जाए और हमारा नुकसान से हमें बचाया जाए, वरना हम गवर्नमेंट को मुतनब्बे करते हैं कि आज तो ये सनीमा बाजार में हमने एहतजाज किया है, इस एहतजाज को पूरा गिलगित तक हम फैलाएंगे। The local residents even complain about heavy electricity bills that they have to pay for low voltage electric power that they receive for an hour or two in a day. Due to continuous ignorance and corrupt administrative system, the problem of load shedding is rising in Gilgit-Baltistan with the passage of time. Over the years, Pakistan has only shot down an ecologically abundant and economically prospering region and has turned it into the most neglected and backward region of southern Asia. And next we move on to Jammu and Kashmir, where the administration is keen to develop entrepreneurial ecosystem in different sectors. Moving on the same lines, a skill development program was organized by the Council of Scientific and Industrial Research, Pulwama. During the training, participants were enlightened about the entrepreneurial chances in the cultivation of medicinal and aromatic plants. Take a look. To expose Kashmiri students to the world of opportunities in the medicinal and aromatic plant industry, a 2-day training program was held in Pulwama. Organized by the Council of Scientific Research, CSIR, in collaboration with Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu, the workshop was held at its field station, Bonera. Themed as entrepreneurship opportunities in cultivation, processing and marketing of aromatic plants, the training session was the part of CSIR's integrated skill initiative that aims to impart skills and enhance capacity building through specific industry-oriented skilling programs. The program was presided over by Tej Pratap,
who is the Vice Chancellor of GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand, and is also a member of National Monitoring Committee CSIR Aroma Mission. While sharing his views on medicinal and aromatic plant cultivation, he said it is a highly fruitful business and the government too is giving a boost to this industry. दो दिन की ट्रेनिंग इन्होंने रखी है ना CSIR का जो स्टेशन IIM जैसे कहा कि यूथ को कॉलेज वाले बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जी जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी खेती करके अपने लिए एग्री बिजनेस कैसे है एंटरप्रेन्योरशिप सेट करते हैं। उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वक्त ऐसा आ रहा है कि आने वाले दिनों के लिए अगर किसी ने खेती से अपनी लाइफ गुजारनी है तो आप किसान तो नहीं बनना चाहेंगे कि जो शाली उगाएं या कुछ और करें। आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे आपको अच्छा पैसा मिले। अच्छा पैसा मिलने के लिए ये नई किस्म की फसलें आपको चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है चला, जैसे अरोमा मिशन है, इसके बाद फ्लोरिकल्चर मिशन है। ये असल में ही छोटे किसानों को इसमें लाने के लिए, कश्मीर के लिए तो लेवेंडर और अरोमा के लिए इतना पैसा, मैं उसका खुद मेंबर हूं भाई। सरकार ये देखती है किसान क्या नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं है उनको, मशीनें चाहिए, बीज चाहिए, वैज्ञानिक सलाह चाहिए, वो सरकार करेगी, बाकी तो लोगों ने करना होता है। फिर Around 73 participants took part in the program. These included members of the National Rural Livelihood Mission, self-help groups, research scholars from SQUAS Kashmir, and students of the Government Degree College, Baramulla. During the two-day training, technical sessions were conducted wherein the participants were apprised about the entrepreneurship opportunities in the cultivation and processing of the medicinal and aromatic crops. यहाँ पर हमें आज पता चला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है एरोमेटिक मिशन में या फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट मिशन में, उसके बारे में हमने आज यहाँ जाना। यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे वो थे डॉक्टर तेज प्रताप। उन्होंने हमें बहुत कुछ अच्छे वर्ड से आगाह किया कि कैसे हम, क्योंकि आजकल जो अगर हम देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, श्रिंकिंग हो रही है, तो हम एज एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स कैसे आगे जा सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। Field and exposure visits were also held for on-farm capacity building. Along with this, training on quality planting material or QPM generation, crop production and post-harvest management was also provided. Kashmiri students lauded the initiative taken by the concerned institutions to help them establish their own aromatic plant units. आज हमें जानकारी मिली अबाउट डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आज हमें लेवेंडर के बारे में और जो भी अरोमा प्लांट्स है उनके बारे में जानकारी मिली, और जो भी फ्लोरिकल्चर मिशन स्टार्टअप कर रही है जो CSIR IIM, तो उसमें बहुत सारी जानकारी मिली। तो रिलेटेड टू लेवेंडर उसको हम कैसे प्लांटिंग, उसकी प्लांटिंग अबाउट प्रैक्टिस, प्लांटिंग प्रैक्टिस, और उसको फिर प्रोसेस करना और उसको फिर मार्केट में सेल करना, वो सब हमें आज वो जानने को मिला। हमें बताया गया है कि पहले प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं, फिर उनको कैसे कल्टिवेट करते हैं, और फिर उनको कैसे हार्वेस्ट करते हैं, और उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर उनको ऑयल कैसे निकालते हैं, और उनकी मार्केटिंग कैसे होती है, और मार्केट में प्राइस क्या होती है। Jammu and Kashmir is believed to have more than 5,000 medicinal and aromatic plants. Of these, about 4,000 are found in the Kashmir Valley. Kashmir lavender is called the crown in the world of aroma. Its cultivation in the Union Territory
has seen a surge in the past 10 years due to various initiatives taken by CSIR, Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu. Awareness campaigns are also being conducted for farmers to promote the cultivation of lavender and other aromatic plants in the region due to their profitability. The locals of Katwa are receiving a healthcare facility at their doorsteps, that too for free. All thanks to the central government for providing the first ever telemedicine assisted ambulance to the district. Equipped with latest lab technology, this Doctor on Wheels service was first launched in Doda, where it has successfully spent 3 months. Have a look. Gone are the days when people in far-flung areas of Katwa had to cover long distances to see a doctor. With ambulance having telemedicine and teleconsultation facility running from pillar to post in the district, people are taking a sigh of relief. Launched as a part of Arogya Outreach Healthcare Program, this Doctor on Wheels ambulance service is the first healthcare service that will be delivered via digital mode. Equipped with latest lab technology, the ambulance also connects patients with specialist doctors in Hyderabad, Bengaluru, Surat and Ahmedabad if further medical advice is required. And in case a surgery is to be done, then the medical staff at the facility refers the patient to the Government Medical College, Katwa. ये प्रोग्राम का बैकग्राउंड है डॉक्टर्स ऑन व्हील्स। ये प्रोग्राम हर गांव को जाते। अभी ये 7th लोकेशन जराई विलेज में है और ये विलेज में सारा लोगों को हर दिन हम लोग 100 को कवर कर रहे। पूरा प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन एंड एसिडिटी, जॉइंट पेन प्रॉब्लम, ये लोग ज़्यादा है, इसको कवर कर रहे। और ये हमारा कैंप में होता, टेस्ट होता और दवाई देते और किसी को भी ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर कंसल्टेशन भी मिलता। हमारे पास है 15 डॉक्टर्स कंसल्टेशन में है, मगर जिसका ज़रूरत है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करते। अगर ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, ऑर्थो प्रॉब्लम है तो वो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते। और जनरल फिजिशियन भी है, किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको कंसल्ट करते। स्किन स्पेशलिस्ट है, स्किन का कुछ प्रॉब्लम है तो इधर डर्मेटोस्कोपी होता, इसके अंदर फिर डॉक्टर को वही इमेजेस सेंड करते, उधर से कंसल्टेशन भी होता। और जिसको सेकेंडरी कंसल्टेशन में सर्जरी को पड़े तो सर्जरी के लिए हम लोग कथुआ मेडिकल कॉलेज को भी रिफ़र कर रहे हैं। This ambulance service will cover 60 villages in a period of 2 months, examining over 5,000 people. People using this healthcare service are able to avail free medicines and super specialist consultation within a span of 1 hour. Different types of lab tests are performed at this facility, and the blood sampling of patients also takes place on spot. Locals are expressing their gratitude to the central government for taking such an initiative in coordination with Sahara Health and Development Society and O Health, which is its technology partner. हर तरह के लोग जाइए चेकअप करा देन, जिन्हें की बीपी है वो बीपी चेक करा देन। मैडिकल स्टाफ आए दा बड़ा अच्छा लोकें डील करा दा सवेरे दा, क्योंकि मैडिकल है जेड़ा भी चलो हर पिंड दे विच जरूरी है, कदी कदी चेकअप जनता दे होने चाहिए। और अगर जनता की सहूलत अपने विलेज में लभी जा, अपनी पंचायत में लभी जा, जनता ही होर के चाहिए। ऐसी फैसिलिटी आज के युग में, आज के दौर में चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति है वो प्रॉपर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंच पाता है तो वहाँ उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स आपके घर में आ रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, अपने चेकअप्स कराइए और जो भी फर्दर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, जो ओ सहारा है, जहाँ ये सहारा ओ हेल्थ है, या सहारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पूरा सपोर्ट करेगी और उसमें आपका टाइम भी मिनिमाइज होगा
और टाइम भी मिनिमाइज होगा, आपके पैसों की बचत भी होगी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये सबका ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव को लोगों को 60 गांव में कठुआ के विलेज हैं, इनको उन्होंने कवर करना है, तो लोगों को इसको आगे भी सपोर्ट करना चाहिए। Doctor on Wheels ambulance service was inaugurated by the Union Minister of State in the PMO, Dr. Jitendra Singh, on February 12 this year. Earlier, this service was started in Doda, where over a period of 3 months, 186 villages were covered, benefiting 3,600 people. इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो हेल्थ सर्विसेज लोगों को मिलनी चाहिए वो कभी कभी बहुत समय लग जाता है, तो कम समय में हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए तो उससे क्या हो जाएगा, बीमारी की पहचान जल्दी होगी और इलाज भी जल्दी हो जाएगी, अगर और खर्चा भी कम हो जाएगी। वो खर्चा कम करने के लिए और कम वक्त के अंदर इलाज मिलने के लिए ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन दिया जाता है और पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी से 10 मिनट के अंदर टेस्ट रिजल्ट इमीडिएटली दिया जाता है। सो जो टेस्ट हमें रिजल्ट लेने के लिए हमें 1 दिन 2 दिन लगता है, वो यहाँ पर 10 मिनट में हो जाता है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलने के लिए हमको 1 दिन कहीं दूर जगह जाके डॉक्टर से मिलना पड़ता है, वो यहाँ पर 10 मिनट के अंदर टेली कंसल्टेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हो जाता है। If initiatives like Doctor on Wheels are taken on a regular basis, they can go a long way in solving the healthcare issues of people, especially in far-flung areas. Moving on, when the chill of winter begins to fade and the king of all seasons, spring, takes over, the fascinatingly historical temples of Khajuraho in Chhatarpur district of Madhya Pradesh start preparing to celebrate the glory of the classical dance forms of India. Organized as Khajuraho Dance Festival, the week-long cultural extravaganza witnesses a number of eminent gurus and young artists performing a blend of different genres of classical dances. So today, in our section of Incredible India, let's take a look at its 48th edition. The Khajuraho Dance Festival, which was primarily meant to showcase the classical dance forms of India, has today grown into an event that offers a complete experience of Indian heritage and its rich art and culture. Held against the backdrop of magnificently lit Khajuraho temples, popularly the Chitragupt temples, built by the rulers of Chandela dynasty between 1950 and 1050 AD, takes us back in time and make this festival completely irresistible. The intricate footwork of Kathak, highly stylized and sophisticated Bharatnatyam, and soft lyrical temple dance of Odissi keeps the audience spellbound during the whole event. I'm really glad that I got to know about it pretty much by chance, because I'm very much enjoying it. It's been quite impressive, especially at this backdrop of the ancient temples. So it's my first night, but I'm gonna stay definitely for the second night to see more of those dances. This year too, the festival witnessed some of the great performances by legendary as well as upcoming artists. Palipuram Suni, a well-known Kathakali exponent from Kerala, enthralled the audience as he performed with his wife Paris Lakshmi, who is a Bharatnatyam dancer. They presented Krishna Maya, that highlights stories from Lord Krishna's life with compositions from Kathakali and Bharatnatyam repertoire. Today we performed the Krishna Mayam. It's a duet of Kathakali and Bharatanatyam. And we are so happy that we got the
chance and blessing to perform here at Kashmir Now Dance Festival. We've been dreaming of this day, and today is very special for us because it's the 85th performance of Krishna Mayam. So I think it's really a lucky number for us. And we are looking forward to come back here at Kashmir Now because we love the place, and temples are so beautiful. I've been here before, but yes, it's a wonderful place. Besides the high-octane performances, the festival also put up a number of exhibitions like Alankaran, Art Mart, Nepatya, Hunar Chalchitra and many more. These events not just offered visitors with a shopping experience, but also provided them with an opportunity to meet the faces behind the meticulously made products. Besides, artisans got an opportunity to sell and market their products. आर्ट मार्ट भी है यहाँ पे और एक फेयर भी लगा है, तो इसमें सभी लोग आए हैं और पर्यटकों के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक गर्व की बात है। तो ये हर साल जो ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि लोकल जितने भी हमारा आर्टिजान्स हैं उनको प्रमोट करें और उनसे ज़रूर इस दौरान आप शॉपिंग करें और प्रमोट करें अपना कल्चर। Altogether, Khajuraho Festival is a reflection of the heritage that withstood the ravages of time and whose glory still shines through and draws visitors from all over the globe. And that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.